सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि पब्लिक हेल्थ रिस्क फिलहाल कम है। जानवरों से इंसानों के इन्फेक्शन के सिर्फ 67 केसेस आए हैं और एक मौत हुई है। वायरस के जीनोम में लगातार हो रहे बदलावों से साइंटिस्ट परेशान हैं। If there are changes that make it more possible for the virus to transmit from person to person, which so far we haven't seen, then that could be a real challenge in terms of our public health response and is the reason that we think of this virus as having pandemic potential. डेविस का ये भी कहना है कि लोग इन्फेक्शन के खतरे को कम कर सकते हैं। Avoiding contact with sick or dead wild animals is probably the most important thing to do. We know that pasteurization of milk, cooking of meat to the recommended temperatures, and cooking of eggs are effective to really inactivate this particular virus.